CYDA, 25 years inspiring young people. I will try and now talk a little bit about what are some of the challenges on the way ahead that remain. उससे पहले दो तीन चीजें मैं स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन में जितने संसाधन सरकार ने लगाए हैं, मेरे ख्याल से विश्व में किसी अन्य देश में इतना संसाधन कभी नहीं जुटाया गया इन दो विषयों में। So in the last decade, we've seen an unparalleled public investment in drinking water and sanitation that we've never seen before. And very few countries have seen this kind of significant public investment for addressing these two issues. The second is that one of the reasons why both Swachh Bharat Mission and Jal Jeevan Mission have been able to make very significant improvements is because of the political leadership that has actually supported this. क्योंकि जो नेतृत्व है सरकार की, क्योंकि उनको ये लगा कि ये महत्वपूर्ण मसले हैं और इस पर इन्होंने अपना पूरी ताकत सरकार की लगाई, तो उसके फल नजर आते हैं। इससे पूर्व जबकि पेयजल स्वच्छता के कार्यक्रम हमेशा रहे, पर क्योंकि केंद्र सरकार के स्तर पर, प्रधानमंत्री के स्तर पर इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, तो शायद उसका असर इतना मिला नहीं। The third thing that we've seen is that in the process of implementing Swachh Bharat Mission and Jal Jeevan Mission, the ability to mobilize states and the bureaucracy in these states to rally around these programs has also been very significant. Swachh Bharat Mission की एक बहुत जो महत्वपूर्ण जो सफलता रही वो ये है कि for the first time Swachh Bharat Mission made sanitation a topic for conversation in normal forum. इससे पूर्व कभी इसको लेकर आम घरों में चर्चा नहीं होती। And in some sense, Swachh Bharat Mission was able to make sanitation everyone's business. The second important thing about Jal Jeevan Mission is that it is changing what is normal. जो इस सभा में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आम बात है कि भाई आप सवेरे उठे, घर के अंदर टूटी लगी हुई है, पानी उपलब्ध है। ये इस देश में बहुत सारे करोड़ों लोगों के लिए ये संभव नहीं था। और अगर ये पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था घर में सुनिश्चित की जा रही है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल जो हमारे लिए है उनके लिए भी बदला जा रहा है। And I think that's the most significant impact of this. और इसके जो सबसे जो लाभ जो मिलने वाला है वो विशेषकर तीन लोगों का, महिला जिनकी जिक्र आनंद जी ने की, किशोरिया और जो वृद्धावस्था में जो लोग हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर वृद्धावस्था में लोग हैं, घर में अगर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, तो क्या मजबूरी, क्या परेशानियां उनको सामना करना पड़ता है। पर आज वो बदल गया। Let's focus a little bit on the challenges that we are still faced with. We will need to now find ways of addressing as we move forward. The first is with regard to equity. Even now, the fact that SBM 2.0 still talks about leaving no one behind, ensuring that everyone has access to individual household toilet, is recognition of the fact that there are still gaps that exist, and these gaps exist for two kinds. One is there are spatial inequalities. कि कुछ गांव है, कुछ गांव में कुछ बस्तियां हैं, कुछ टोले हैं जो रह जाते हैं, कुछ घर हैं गांव में जो रह जाते हैं। And this happens, so inequality is spatial, but can also be found within habitations because of socio-economic. कि अगर हो सकता है कि कोई परिवार है जिसमें वृद्धावस्था के लोग हैं और कोई है नहीं और वो रह गए। Could be a women-headed household that has got left behind. Could be areas with significant Dalit populations, tribal populations who get left behind. So there is inequality that exists, and it is not fair to expect Swachh Bharat Mission and Jal Jeevan Mission to fix that, because these are historical problems with targeting that we have not found a way to address. So in some sense, there is still inequity in access that we need to address. Now, not just is there inequity in access, there are also challenges with reliability of service. ये सिर्फ समस्या ये नहीं है कि भाई लोगों के पास जो ये सुविधाएं हैं उपलब्ध है या नहीं है। सवाल ये भी है कि जो सुविधाएं हैं वो क्या निरंतर उनको उपलब्ध हो सकती है, क्या वो आप सुनिश्चित है कि आप एक रेगुलरिटी है उस सर्विस में।
और उस गुणवत्ता को लेकर भी सवाल है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड। द सेकंड सेट ऑफ चैलेंजेस आर अराउंड बिहेवियर। अब अगर घर में अगर शौचालय है पर शौच से पहले के पश्चात अगर लोग हाथ नहीं धोते हैं अच्छी तरह, या खाने से पूर्व अगर हाथ नहीं धोते हैं, तो जो लाभ जो मिलना चाहिए सैनिटेशन की व्यवस्था से वो संभवतः नहीं मिलेगा। So in some sense, it is not enough to have access to a toilet. More important now to also focus on hand hygiene. If you wish to get the benefits from this access to sanitation that have been made available. Similarly, if you have access to water at a household level, you also need to ensure that you are practicing good habits in terms of storage of water and consumption of water. If you don't store and consume water properly, there is a risk again of contamination and of the health consequence of that. And the third is around consumption of water. आज की तारीख में सरकार ये चाह रही है कि 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन टूटियों के माध्यम से घर पे उपलब्ध है। शहरों में ये 135 लीटर की बात की जा रही है। अब सवाल ये है कि धीरे धीरे जब ये व्यवस्थाएं जब उपलब्ध हो जाएंगी और लोगों की आदत पड़ जाएगी कि भाई घर पे पानी उपलब्ध है, संभावना है कि उपभोग भी बढ़ेगा। Experience would suggest that reliable access to a service will lead to an increase in consumption, and that the experience world over suggests is not sustainable. So in some sense, we have to also start soon after access is being ensured to start to worry about how do we change behaviors about using water judiciously. How do we ensure that consumption does not grow without any boundaries? One challenge that is clear even in Jal Jeevan Mission and Swachh Bharat Mission and is being attempted to address is with regard to operation. कि गांव में पाइपलाइन बिछाना, टूटियां घर पर लगाना, स्टोरेज की व्यवस्था बनाना, ये तुलनात्मक रूप से आसान है। पर ये सुनिश्चित करना कि अगले 5 साल 10 साल तक ये व्यवस्था निरंतर चलेगी, ये कठिन है। और इसको करने के लिए आवश्यक ये है कि गांव स्तर पर तो पर्याप्त व्यवस्थाएं हो जहाँ की समुदाय नेतृत्व ले इसको संभालने में और इसकी देखरेख करने में। So operation and maintenance of piped water supply schemes, as well as investments made with liquid waste management, grey water, fecal sludge management, all are likely to require special attention as we move forward, or there is a risk of these schemes failing because of poor operation and maintenance. पर ये समझने की जरूरत है कि अगर सही मूल्य पानी का अगर लोग नहीं समझेंगे तो उसका सदुपयोग नहीं करेंगे। And in the absence of not recognizing the true value of water, there will be no incentives for people to use it judiciously. But more importantly, you will also not have the financial resources to be able to operate and maintain these systems in the future. And so in some sense, the financial viability of these schemes will need some attention. In the last few years, there has been a lot of effort to ensure that Anganwadis, healthcare facilities and schools have access to water and sanitation facilities. और अगर आप सरकार के आंकड़े अगर देखेंगे तो आज की तारीख में मेरे ख्याल से हर विद्यालय में ये बताया जाता है कि पानी की और शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है। But there are three challenges that remain with WaSH institution. The first is to do with adequacy. कि अगर 200 बच्चे हैं और सिर्फ मात्र 2 शौचालय हैं तो पर्याप्त नहीं है, और ये अपेक्षा करना कि बच्चे इसको इस्तेमाल कर पाएंगे ये संभव नहीं है। So we need to look at adequacy of the infrastructure. कि कितनी जनसंख्या है जो इस्तेमाल कर रही है उस व्यवस्था को, उसकी तुलना में क्या हमारे पास पर्याप्त पेयजल की व्यवस्थाएं हैं और शौचालय हैं। Second, we need to ensure appropriate. आंगनबाड़ी में आप किस तरीके का शौचालय बनाते हैं, किस तरीके की टूटियां लगाते हैं, किस हाइट पे लगाते हैं, और एक हायर सेकेंडरी स्कूल में किस हाइट पे लगाते हैं, इसमें फर्क होता है। How do we ensure that we have appropriate designs based on age and on gender? So adequacy and appropriateness of the infrastructure is the second sort of issue. And the third set of issues with regard to institutions is the availability of finance for operation and maintenance. बहुत सारे विद्यालयों में जबकि व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर क्योंकि पर्याप्त संसाधन नहीं है उनके पास, तो उसकी देखरेख नहीं कर पाते।
I'd like to conclude by saying that this journey ahead will not be possible without the leadership of young people. Women are being able to find innovative solutions to problems. And also, if we are not able to find entrepreneurial solutions to some of the problems that exist, because in some sense, the state would have completed the investment that it needs to make, and we will need to find other ways of sustaining this progress in the future. Thank you. To donate and to get more information, log on to www.cydaindia.org.